Hello everyone, myself Umesh Kumar, Assistant Professor in ASS Department, IIMT College of Engineering, Greater Noida. Today I'm going to present on the topic of transformer. Transformer is a static device which transfers the electrical energy from one electrical circuit to another electrical circuit with the desired change in voltage and current via the magnetic flux without changing frequency. Input to a transformer and output from a transformer, both the alternating quantities, that is AC quantity, not a DC. Electrical energy is generated and transmitted at an extremely high voltages. The voltage is to be then reduced to a lower value for its domestic and industrial use. This is done by using a transformer. The power transmission system using transformer is shown in the figure. When the transformer changes the voltage level, it changes the current level also, but frequency is constant. This is the generation station, and then this is the transformer 1, this is the transformer 2, and these all the two transformer are a step down transformer, and then distribution system, and after one consumer. This is the construction of transformer. This is the primary side and this is the secondary side of the transformer, and this is the core. The primary winding is connected to AC supply and AC current start flowing through it. The AC primary current produces an alternating flux in the core. Most of these changing flux gets linked with the secondary winding through the core. The varying flux will induce voltage into the secondary winding according to the Faraday's law of electromagnetic induction. There is no electrical contact between the two windings, and electrical energy gets transferred from primary to secondary winding. A simple transformer consists of two electrical conductors called the primary winding and the secondary winding. Energy is coupled between the winding by the time-varying magnetic flux that passes through both the primary and secondary winding. The transformer action does not take place with a direct current of constant magnitude. तो ट्रांसफार्मर को हम डीसी सप्लाई नहीं दे सकते प्राइमरी पे, ट्रांसफार्मर हमारा बस एसी सप्लाई पे ही वर्क करेगा. इसका मेन रीजन ये है कि ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए प्राइमरी साइड में जो हमारे यहाँ सेकेंडरी साइड में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसके लिए दो कंडक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है. अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो जो हमारा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर हमारा जो कंडक्टर है वो भी स्टेशनरी है, तो दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है. तो यहाँ पर जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो है. तो यहाँ डीसी सप्लाई देने से हमारा कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, इसलिए हम जो ट्रांसफार्मर है हमेशा एसी पे ही ऑपरेट करवाते हैं. The transformer are of different type. First one is static transformer, and then variable transformer, and last one is auto transformer. The magnetic core is a stack of thin silicon steel laminations in order to reduce the eddy current losses. These laminations are insulated from one another. This is core type transformer, in which this is the primary winding and this is the secondary winding. In core type transformer, core of this transformer is in the form of rectangular form and made up of lamination to reduce the eddy current losses. Core is made up of high-grade silicon steel to minimize hysteresis losses. Laminated rectangular core provide a single magnetic circuit. The primary and secondary winding are uniformly distributed on the two limbs of the core. Low voltage winding is placed near the core so that less insulation is required.
And in core type transformer, the cooling is better. The coil can be easily removed by removing the lamination of the winding. It is used for low voltage as well as high voltage transformer. And next one is cell type transformer. The primary and secondary winding are placed on the central limb. This central limb. The high voltage and low voltage winding are of sandwich type. This type of core provides double magnetic circuit. This type of core provides a better mechanical support and protection for the winding. The core surrounds the winding so that cooling is not very effective. This construction is used for only high voltage transformer, that is power transformer. Working principle of transformer. A transformer is based on the principle of mutual induction, that is, whenever the amount of magnetic flux link the coil changes, an EMF is induced in the coil. This is the construction of the transformer. It consists of two coils of insulated wire, the primary and the secondary, wound on a laminated soft iron. This is the soft iron. This. The coils are completely insulated from each other, and one usually contains more turn of wire than the other. The frame is often rectangular in shape, and the coil may be wound on opposite bar of the frame or one on top of the other on the central bar. So this is the primary winding, and this is the secondary winding, and this is the magnetic core. The static transformer. The static transformer is based on the principle of electromagnetic induction and is used to alter voltage of an alternating current and to render the current earth-free. Working of the static transformer. An alternating current is passes through the primary coil and set up a varying magnetic field which cuts the secondary coil and induce an EMF in it. It is essential that the primary current varies in intensity, otherwise there is no movement of magnetic field related to the conductor and no EMF is induced. In the secondary coil, there is no electrical conduction between the primary and secondary coil, the energy being transmitted from one to the other by electromagnetic induction. The core serves to concentrate the magnetic field and is made of soft iron, as this material is easily magnetized and demagnetized. It is laminated to prevent eddy current. Now we will talk about ideal two-winding transformer. These all the conditions for the ideal transformer. First one is winding resistance is negligible. There is no leakage flux. The core losses, that is eddy current losses and hysteresis loss, are zero. The magnetization curve for the core is linear. At later stage, the effect of these assumptions will be taken up one by one. Let us consider flux हमारा जो है phi m sin omega t है, where phi max. This is the maximum flux, and this is the primary side, and this is the secondary side. EMF इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा EMF इंड्यूस हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो उस EMF इक्वेशन को हम डिराइव करने वाले हैं. द इंड्यूस EMF इन N1 टर्न प्राइमरी बाई एन ऑल्टरनेटिव प्लस फाई. जो हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो EMF इंड्यूस होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, उसका हमारा जो फॉर्मूला है माइनस N1 d फाई बाई dt. जहाँ की जो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारा EMF इंड्यूस हुआ है वो अपने कॉज को अपोज करेगा, वो अपने कॉज को अपोज करेगा, इसलिए हमारा ये हमने बाहर क्या लगाया है माइनस. अब हमने क्या करा, फाई की वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पर रखा और इसका डेरिवेटिव किया, तो हमारा ये आ गया माइनस N1 ओमेगा फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी. अब हमने क्या करा, इस कॉस ओमेगा टू को कन्वर्ट कर दिया साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, तो ये जो हमारा माइनस था ये प्लस हो गया और हमने कन्वर्ट कर दिया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. यहाँ से हमारा आ गया E1 बराबर E1 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वेयर E1 मैक्स इज
N1 omega 5x. The RMS value of E1 induced in the primary winding. अब हमने क्या करा, अपने EMF का RMS वैल्यू निकाला बाई E1 max by 2. तो हमारा जो RMS वैल्यू इक्वेशन आया 4.44 FN1 5 max, जहाँ हमारा FF फ्रीक्वेंसी N1 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड, और 5 max है मैक्सिमम फ्लक्स. The EMF E1 induced in N1 turn must be in such a direction as opposed the cause, that is I1, as per Lenz law. Since the primary winding resistance is negligible, E1 at any instant must be equal and opposite to V1. तो यहाँ पर हमने V1 बराबर क्या लिख दिया, E1. तो ये जो हमारा EMF इंड्यूस हुआ है वो सप्लाई वोल्टेज की वजह से हुआ है, तो उसी का हमारा अपोज करेगा. तो N1 d∅dt. अब हम EMF जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में जो इंड्यूस हुआ है उसको भी हम सेम डिराइव कर सकते हैं, बस जहां पर N1 था वहां पर हम N2 ले लेंगे, और बाकी सेम हमारा सब कुछ है. फॉर्मूला भी हमारा ये आया, E2 बराबर 4.44 FN2 5 max. द वोल्टेज रेशियो ऑफ इंड्यूस वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. अब हमने जो प्राइमरी सेकेंडरी में जो इंड्यूस EMF का जो रेशियो है वो हमारा टर्न रेशियो के बराबर होता है. तो देन E1 divided by E2 is equal to N1 divided by N2. The total primary current I1 is a phasor sum of I1 dash and IE, जहाँ की हमारा जो IE है वो एक्साइटेशन करंट है, और I1 dash जो हमारा है वो हमारा प्राइमरी करंट है. The power factor on the primary side of the ideal transformer is cos θ1. If the magnetizing current IE is neglected, तो हमारा जो MMF बैलेंसिंग इक्वेशन है वो N1 I1 is equal to N2 I2. यहाँ पर हमने एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करा है जिसमें कि हमने फ्लक्स को लिया है रेफरेंस, और फ्लक्स के ही हमारे सेम फेज में आता है हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट. तो जो हमारा IE है मैग्नेटाइजिंग करंट है, और IC जो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री पे हमारा होता है IC, और दोनों का जो रिजल्टेंट होता है हमारा नो लोड करंट होता है. और जो यहाँ पर हमने E1 और E2 को जो लिया है फ्लक्स से 90 डिग्री पर लैग करता है, जो कि हमने अपनी इक्वेशन में डिराइव कर चुके हैं. तो ये जो हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ करा है वो लैगिंग लोड के लिए यहाँ पर किया. रियल ट्रांसफार्मर एंड इट्स इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम किसी भी मशीन का एक इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि उसके हम जितने भी पैरामीटर्स होते हैं सभी को यहाँ पर हम एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हम दिखाते हैं. तो ये हमारा प्राइमरी साइड हो गया, ये हमारा सेकेंडरी साइड हो गया. प्राइमरी पे हमने सप्लाई यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बना, एक फ्लक्स बन गया. तो इसी फ्लक्स जो हमारा फ्लक्स प्राइमरी टू सेकेंडरी पे जाके हमारा लिंक होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, और एक फ्लक्स हमारा एयर के थ्रू हमारे यहाँ पे लीक करता है, तो ये हमारा इसे बोलते हैं लीकेज फ्लक्स. तो यहाँ पर हमने इसी डायग्राम को हमने रिप्रेजेंट करा है नीचे वाले से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में. तो इसमें हमने जो R1 दिखाया ये हमारा प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, और XL1 है हमारा प्राइमरी का लीकेज रिएक्टेंस, और यहाँ पर जो E1 हमारा है प्राइमरी इंड्यूस EMF, और प्राइमरी का हमारा नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न N2, और हमारा यहाँ पर जो हमने E2 दिखाया है वो सेकेंडरी इंड्यूस EMF, एंड R2 इज द secondary resistance and XL2 is the secondary leakage reactance. Now approximation equivalent circuit diagram. अब हमने क्या करा, जो सेकेंडरी के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको हमने ट्रांसफर किया प्राइमरी साइड पे. तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्रांसफर करके, दैट इज ऑफ XL2 डैश एंड R2 डैश. और वैसे फिर इसके बाद हमें इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करने के लिए हमने इस जो हमारा ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या कोर कंपोनेंट है इसको हम ले आए अपने प्राइमरी के लेफ्ट में, क्योंकि हमारा जो I0 है ये 2% ऑफ फुल लोड करंट होता है, तो हम इसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं अपने कोर को. तो यहाँ पर हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड जो हमने निकाल दिया हो R1 + R2 डैश, and equivalent reactance referred to primary side is XL1 plus XL2 dash. Now this is the phasor diagram in lagging load and leading load. This is for lagging load. तो हमने यहाँ पर V2 को जो हमारा जो लोड वोल्टेज है या सेकेंडरी वोल्टेज है उसको हमने रेफरेंस लिया, और इससे सम एंगल 5 पे हमारा I2 लैग कर रहा है I2,
इसी डायरेक्शन में हमारा जो सेकेंडरी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका जो ड्रॉप हो इसी डायरेक्शन में हम दिखाएंगे आई टू आर इक्विवेलेंट, और इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे हम क्या दिखाते हैं, रिएक्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, और इनका जो रिजल्टेंट हमारा वोल्टेज आया वो आया प्राइमरी वोल्टेज। अगर हम प्राइमरी वोल्टेज का अगर हम इक्वेशन भी लिखना चाहें यहाँ से तो लिख सकते हैं, तो V1 इज इक्वल टू V2 प्लस I2R E इक्विवेलेंट प्लस J टाइम्स ऑफ I2X इक्विवेलेंट। ये हमारा लीडिंग लोड के लिए है। लीडिंग लोड के लिए यहाँ पर हमारे V2 हमने रेफरेंस लिया और I2 हमारा लीड कर रहा है 5 डिग्री पे। I2 के डायरेक्शन हमने क्या दिखाया, ये रजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, और इससे 90 डिग्री पे हमने दिखाया रिएक्टिव ड्रॉप, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा आ गया प्राइमरी वोल्टेज दैट इज V1। नाउ फंक्शन ऑफ द स्टैटिक ट्रांसफार्मर alters the voltage of an alternating current. The EMF induced in the secondary coil depends upon the number of turns of wire it has relative to the primary coil. Depending on this number of turns, this transformer can be classified as a stepper transformer. If the number of turns in the secondary is more than of primary, that is N2 is greater than N1, the voltage developed in the secondary will increase or step up. Such a device is called a step-up transformer. इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है इज लेस देन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज N2 इज ग्रेटर देन N1। तो हम इस ट्रांसफार्मर को नाम देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें कि हमारा प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी के वोल्टेज से कम होगा। यहाँ पर हम देख भी रहे हैं मैग्नीट्यूड जो हमारा जो सेकेंडरी वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज मैग्नीट्यूड। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, if the secondary coil has fewer turns than the primary, that is N2 is less than N1, then the EMF or voltage in the secondary will be less than the primary, that is it is step down। Such an arrangement produce a step down transformer। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स कंपेयर टू सेकेंडरी साइड। तो यहाँ पर जो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो आएगा लेस देन इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी साइड वोल्टेज जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है सेकेंडरी साइड से। नाउ इवन रेशियो ट्रांसफार्मर, और इसी को भी ही हम बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और 1:1 ट्रांसफार्मर। तो इसमें है इफ द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज द सेम, the voltage in the primary is the same as that of the secondary. Such a device is called an even ratio transformer or isolation transformer। तो यहाँ पर जो हम नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी में देख रहे हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर जो प्राइमरी का जितना वोल्टेज होगा उतना ही सेकेंडरी होगा, इसलिए जो हम रेशियो निकालते हैं Vp/Vs वो 1 आता है, इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं 1:1 ट्रांसफॉर्मर। Renders a current earth free। If an accidental connection is made between live wire and earth, current will flow to earth as short circuited current। If this connection were made through person, they would then receive earth shock as the current flow through them to earth। This static transformer reduces this danger by using electromagnetic induction to transfer the electrical energy into the secondary coil, where earth plays no part in the circuit। The effect on the secondary coil of magnetic field around the primary is to cause electron to move around the secondary circuit, but not to leave it। Earth plays no part in the secondary circuit because even if an earth connection is made with it, electrons will not leave the circuit but will continue to flow around it। This is an important safety factor, and that all current applied to patient are rendered earth free by using a static transformer। Now the variable transformer। वेरिएबल ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन होने वाला है। दिस कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल एंड इज मेड सो दैट वन ऑफ देम कैन बी ऑल्टरेड इन लेंथ। द प्राइमरी कॉइल हैज ए नंबर ऑफ टैपिंग and a movable contact can be placed on any one of these two by turning in knobs।
There is a step of voltage in the secondary coil. In this way, a very crude control of the voltage is obtained. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टैपिंग करके हम वोल्टेज को वेरी करवा सकते हैं प्राइमरी साइड पे। तो ये हमारा डायग्राम है वेरिएबल ट्रांसफार्मर का, जिसमें कि अपने प्राइमरी साइड पे हमने कई टैपिंग कर रखा है। तो वोल्टेज को अगर हमें कम करना है तो हमें जो टैपिंग हमें करना पड़ेगा वो हमें डाउन यहाँ पर नीचे करना पड़ेगा, और वोल्टेज को यदि हमें ज़्यादा लाना है तो टैपिंग को हम ऊपर करते हुए जाएंगे। तो ये हमारा वेरिएबल ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। नाउ द ऑटो ट्रांसफार्मर, it consists of a single coil of wire with four contact points coming from it. It works on the principle of electromagnetic induction, but it has the disadvantage that it always only a small step up and does not render the current earth free. तो ऑटो ट्रांसफार्मर से फायदा भी होता है कि हमारे यहाँ पर कॉपर लॉस कम होता है और कॉपर की हमारा सेविंग काफी हो जाती है, क्योंकि इसमें हम एक सिंगल वाइंडिंग का यूज करते हैं। और जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है वहां पर दो वाइंडिंग होते हैं, और वहां पर कॉपर कंडक्टर की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहां पर जो है कॉपर लॉस ज्यादा होगा, और यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर में हमारा कॉपर लॉस कम होता है। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, a transformer is used in almost all AC operation. For example, in voltage regulators of TV, refrigerator, computer, air conditioner, etc. In the induction furnace, a step-down transformer is used for welding purpose. In the transmission of AC over long distance. Now we have studied the concept of eddy current. Eddy current are created through a process called electromagnetic induction. When alternating current is applied to a conductor such as copper wire, a magnetic field develops in and around the conductor. Eddy current are induced electrical current that flow in a circular path. They get their name from eddies that are formed when a liquid or gas flow in a circular path. तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू भी देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे ये फ्लो ऑफ वाटर है, तो यहाँ पर भी एक हमारा क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन इसमें बन जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं एडी। तो इसको हम कंपेयर करवा सकते हैं अपने ट्रांसफार्मर के एडी करंट से। इसमें भी हमारा ट्रांसफार्मर में भी हमारा जो है एक सर्कुलर मोशन बन जाता है करंट का, जिसको भी हम बोलते हैं एडी करंट, और इसकी वजह से जो हमारा लॉस होता है उसे बोलते हैं एडी करंट लॉस। When an alternating magnetic field is applied to a magnetic material, an EMF is induced in the material itself according to Faraday's law of electromagnetic induction. Since the magnetic material is a conducting material, these EMF circulate current within the body of a material. These circulating current are called eddy current. They will occur when the conductor experiences changing of magnetic flux. As these current are not responsible for doing any useful work, and it produce a loss in the magnetic material known as eddy current loss. Eddy current loss increase the temperature of the magnetic material. Eddy current are used to produce heat in the patent tissues in the inductothermy method of SWD. This is eddy current which are flowing through the transformer core. तो जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जब हमारा चेंज होगा तभी हमारा एडी करंट हमारा फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर के कोर में। If the core is made up of solid iron of larger cross section area, the magnitude of current will be very large and hence losses will be high. The magnitude of the current can be reduced by splitting the solid core into thin sheets called lamination. By laminating the core, the area of each section is reduced and hence the induced EMF also reduced. Thank you.